environment completely polluted. As a result, we are under the impact of these things, where there is a threat of an extinction of several types of creatures on this earth. Whenever there is imbalance in the things on the earth around us or anywhere in the entire ecosphere, we find our life uneasy and complicated. So in this lesson, the writer Nani Palkiwala recalls the green movement that was started to protect the earth, to protect the entire environment. As we know that human population has left all the creatures to an extinction. Overpopulation has really been proved a challenging for all the things in the world. Because of the consumption of the four biological systems that are fisheries, cropland, grassland, and the forest. All are totally imbalanced because of the overconsumption of the fisheries collapses, and because of the overproductivity due to extra need, maximum use of fertilizers, artificial fertilizers, our crop is deteriorated as far as the fertility is concerned. As a result, it is going to be less productive or in somewhere barren. And in the same way, the grassland is converting as a wasteland. And the forests are disappearing day by day, which is a great danger for the entire humanity. Hence, it is regarded the earth as an ailing planet. And when our mother means the land on which we live are sick, how can we predict ourselves that we will become a completely full of sound health? तो जब हमारी धरती पूरी तरीके से बीमार होगी तो हम कैसे ये कल्पना कर पाएंगे कि हम स्वस्थ रहें? That's why the great scholars regarded the earth an ailing planet. इसीलिए जो महान विद्वान हैं उन्होंने धरती को एक बीमार ग्रह के रूप में माना. They regarded it an ailing planet because it has own metabolic needs. It is a living organism. And that's why, because of the overconsumption, because of the imbalance in the four biological system, the earth is declining in health. And that's why it is regarding an ailing planet. In this reference, the writer recalls the movement that was the green movement, which has firmly gripped
than any other movement in the history of the world and left a very vital impact in the entire world. The Green Party was founded in 1970 in New Zealand. And after this, a concept was developed that the earth is a living organism which needs to be respected, which needs to be cared, as it is a very important one for all the living beings sharing on with one another on the earth. And it is the great scholars who try to save the planet the earth. They created an awareness that the entire environment must be protected. Hence, we have seen the changes in the people's perceptions and the people's ideology. They completely changes their mechanical approach to a holistic world. And hence, they understand that the earth can be protected. Where we must plan it. As we know, nowadays the industrialists to protect it. Because industry releases a wastage, sewage, which causes a lot of pollution and harmful to the environment. In countries where the people are very poor, they use cow dung as a fuel along with the woods from the forest. That's why there is a threat of cutting the forest and also the burning of fossil fuel created blanket of carbon dioxide around us. And there are the harmful gases spread out in our surroundings. So that's why it is necessary to understand the importance of the four biological systems as fisheries, grassland, cropland, and the forest. When overpopulation increases in protein-hungry world, there is an overconsumption of fisheries. As a result, this is well. As far as the natural resources are concerned, they are in limited, and there is overconsumption of this. All the natural resources is in the end of exhausting. So that's why we must understand. But the most important thing is in our country like India, where rules are not strictly followed. For an example, the Article 48A provides that the state shall interfere as a result the casteism, untouchability, and all the evils are flourishing day by day, in spite of the rule of equality. So in a country like India, to control the overpopulation, it needs coercion. Because in spite of awareness, the people never think the family planning. Hence, the government must seek
an opportunity of coercion, then the people understand it. And because of the overpopulation, we left other living species at the edge of an extinction. And we, the human being, also left battling with other species. Hence, it is our responsibility that we must consume the things in a limited way. It is also quoted, Mr. Lester Brown, that we have borrowed this land for our future generation as a life tenacity to make it fertile, to make it strong without compromising the needs of our future generation. Development must be, but should not have a compromise to the future generation. We must understand the need of the future generation. Otherwise, there is an imbalance. As a result, we shall lose the things on this planet. And when our future generation on this earth find themselves uneasy to find a land which is barren and infertile, and it is like a scorching cinder. So definitely, in this perspective, thanks to the green movement, created an awareness that the earth is an aging planet. Hence, overpopulation has a determining factor to protect it. Hence, the industries, the businessmen, all the celebrities related to it must come ahead to protect the things like this to save the planet. Then we can predict our future generation to live an easy and a comfortable life where there is pleasant and peaceful atmosphere. So Nane Palkiwala in this version describe a way, but inside, whenever we enter, we find that there is no animal, rather a mirror in which we find ourselves. Realizing the fact that we, the human being, are the most dangerous animals in the world. Hence, we find that really we have made a lot of difference after increasing overpopulation. Hence, it is our responsibility to understand the importance of the family planning in future generation. We have not our ownership on this, but it is a borrowing thing and also rich. Then we can predict future which will be pleasant and harmonious. A lot of thanks to the Green Party, and there are the members who are associated to the green movements because they created an awareness to respect the earth, considering it a living organism, regarding it an ailing planet, which appears as a declining in health because of the imbalance in the whole biological system. Now the question arises that why we the people, knowing all the things, ignore the fact that something is going on, right? It is a matter of concern for all of us, watching each and everything happening around us, but we still holding the false concept. We are living in the fool's paradise. It is a matter of really concern for all of us who call the crown of creation the human being. So, without any delay, we must understand
the fact that really we need to concern about the planet, which we call our motherland. Because when we find our motherland sick, we can't predict, we can't expect ourselves rich and healthy and comfortable and comfortable life. So that's why we must understand and we must realize the fact that we must do something to save the planet. We must create awareness among the people and to highlight the theme of saving the planet, saving the wildlife, to minimize the overpopulation. And the industries is insisting that to minimize the risk of the seaway, the risk of the with the human being can think of a balanced life and to protect the entire environment. So hence, I would like to just appeal all my fellow members and the entire people listening to this can it's a very good month. I hope that you will. होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का भाषा साहित्य पढ़ने के अवसर दें। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तो स्वाभाविक रूप से जो है इनमें बच्चों को विभिन्न प्रकार का अनेकों प्रकार का भाषा पढ़ने का अवसर दिया जाए ताकि इनके अंदर जो है अभिव्यक्ति हो और कल्पनाएं भी हो। तो यहाँ 86वें का भी आपका सही हो जाए। 47वें में देखते हैं बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना और भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि क्लास में जब भी हो तो स्वाभाविक रूप से इनको पढ़ने के लिए बराबर अवसर दिया जाए और इन्हें अपनी भाषा बोलने का भी मौका दिया जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर दें। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा दिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवता के कारण होती है। तो ये एक ऐसी डिजीज होती है जहाँ पर स्वाभाविक रूप से उसको एक भ्रम हो जाता है जो माँ से रिलेटेड है। तो इसमें आपका जो है स्वाभाविक रूप से आ जाएगा डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत। डिस्मॉर्फिया अरुचि लापरवाही तो डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत आता है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डॉट से संबंधित है। तो भाषा अर्जन जो संबंधित है ये से रिलेटेड जो बात कही है स्किनर ने कही है, वाइगोत्स्की ने कही है, चॉम्स्की ने कही, पियाजे ने कही। तो इसको चॉम्स्की ने कहा है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। बहादुर वित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए। शीर्षक तो पहले से मिला हुआ है। बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए भी शीर्षक दिया हुआ है और बहादुर वित्तों कहानी का अंत बदल करके लिखिए। तो यहाँ पर जो है ये चीज जो है परिवर्तित लगती है। तो 50 का आपका ठीक हो जाएगा। 51 कह रहा पोर्टफोलियो में मदद करता है। पोर्टफोलियो किस चीज मदद करता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है सिस्टमेटिक ढंग से। तो ये क्रमिक प्रगति का आकलन करने में होगा। तो 51 का भी आपका हो जाएगा। भाषा का मनुष्य की डॉट और मनुष्य के व्यवहार के साथ। देखिए भाषा के माध्यम से ही आपकी इज्जत बनती है, आपका मान सम्मान होता है और वो विचारों से रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अस्मिता। 52 का पहला। 53 में है ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डॉट और डॉट को आत्मसात कर पूर्ण पर भाषिक क्षमता रखने चुनौतियों, प्रचलनों, जटिलताओं, नियमों, चुनौतियों, अवसरों, जटिलताओं और मानकों। तो भाषा में आगे देखते हैं तो भाई उसमें जटिलताएं वो भी होती हैं
और उन जटिलताओं के साथ साथ नियमों को भी हमें स्वीकार करना है, तब जाकर के हम उस पर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जटिलता और नियम। 54 प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपने कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कहानी पढ़ना सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहें? पढ़ने और मौखिक अभ्यक्त का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की नीतियों को निभा रही है। कहानी सुनने में समय नष्ट हो रहा है। कहानी पर चर्चा भाषा विकार को अवरुद्ध करती है। तो यहाँ पर जो है स्वाभाविक रूप से आपका जो है 54 के अंतर्गत हो जाएगा पढ़ने का और जो मौखिक अभिव्यक्ति है उस सब का विकास हो रहा है। चलिए 55 में कह रहा है कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पढ़ने की कुशलता उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो 55 के अंतर्गत जो है अगर देखा जाए तो अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें अर्थ जो है शब्द तो पढ़ेंगे ही, उच्चारण शुद्धता भी रहेगी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अर्थ निर्माण। 56 में कह रहे हैं संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है तो भाषा का जो विकास होता है वो अगर बेहतर होता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर आपका हो जाएगा परस्पर अगर आपस में अंतःक्रिया होगी, क्योंकि कई लोग हैं तो आपस में विचार शेयर करी होगी। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका? तो इसमें सर्वाधिक योगदान छोटे बच्चे हैं तो विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो 57 का आपका डी हो जाएगा। 58 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो 58 के अंतर्गत जो है ये आपका प्राथमिक स्तर पर सबसे पहली शर्त ये है कि जो कुछ इन्हें दिया जाए उसमें परस्पर जो है संचार प्रक्रिया हो, वातावरण। तो 58 का आपका डी हो जाएगा। 59 में देखते हैं पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो मातृभाषा स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये वैध नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं है, अस्वीकार्य है, स्वीकार। तो इसमें भाषा अगर अपनी बोल रहे तो ये स्वीकार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा आदर के लिए किन शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिससे गुजराती भाषा में भाई बहन का किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य है, तो रूपा का जो उद्देश्य है, देखिए स्वाभाविक रूप से वो चाहती है कि कई भाषाओं का विकास हो। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुभाषिकता को संबोधित करना। तो ये रहे आपके जो है सारे प्रश्न जिनको कंप्लीट किया गया। Once again, welcome back to all of you, my dear students and my friends in your own channel अमित सराफ हिस्ट्री। सभी को शुभ संध्या और साथियों, बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमित सराफ हिस्ट्री में। आज हम जो है हिंदी के बाद अब दूसरा जो स्टेप है हमारा पेडागोजी का है, जिसके अंतर्गत हम बालक के संज्ञानात्मक विकास पर और उससे संबंधित अन्य संक्रियाओं पर प्रश्न करेंगे और उसमें सीखेंगे कि क्या होता है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि शिक्षक कक्षा में छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, या बच्चे को परामर्श देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो विचार करने के उपरांत ये इसमें यही आएगा कि बच्चे को जो है परामर्श देना चाहिए। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से,
शैक्षिक संस्थानों के विकास से या छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि जो विद्यार्थी है उसका सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। कोहलर जो है वो सोच सिद्धांत से संबंधित हैं, बीएस ब्लूम। तो यहाँ पर जो बीएस ब्लूम है वो लर्निंग से नहीं है, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शिक्षा में अवरोधन का कार्य। शिक्षा में अवरोधन यानी जो पूरी तरीके से बाधा डाल दे। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न देना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो बालक है वो अगर उसको उसी क्लास में रखा जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि उसमें जो विकास की प्रक्रिया है या जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो है पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवे का